हेलो फ्रेंड्स, 12 अगस्त 2026 को एक बहुत पावरफुल और रेयर सोलर एक्लिप्स लगने वाला है जो कि लियो साइन में और माघ नक्षत्र में है। दिस एक्लिप्स इज सो इम्पोर्टेंट और आज हम बात करेंगे कि कौन से ज़ोडिएक साइन को सबसे ज़्यादा सावधान रहना है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो डू मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और इस चैनल पे हम एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कंटेंट शेयर करते हैं। Today's topic is the solar eclipse of 12th August 2026. Its importance, rituals और सबसे जरूरी हर zodiac sign पे इसका क्या इफेक्ट होगा। So let's start with the basics. This is a total solar eclipse happening on 12th August 2026. इसका पाथ ग्रीनलैंड, आइसलैंड और नॉर्दर्न स्पेन से गुजरेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, दिस एक्लिप्स विल नॉट बी विजिबल इन इंडिया, क्योंकि जब ये एक्लिप्स हो रहा होगा तब इंडिया में रात का टाइम होगा, रफली रात के 9 बजे से सुबह के 2 बजे तक। So we will not be able to see this eclipse in our sky. Astrologically, इसकी पोजीशन भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये लियो में हो रहा है और माघ नक्षत्र में। अब समझते हैं कि ये एक्लिप्स इतना पावरफुल क्यों माना जा रहा है। लियो इज द सन्स ओन साइन, मतलब कि सन अपने ओन साइन में है। दैट इज व्हाई दिस एक्लिप्स carries a strong energy connected to leadership, authority, ego, and father figures. Astrologically, an eclipse effects don't stay limited to just that one day. इनका असर आने वाले 6 महीनों तक महसूस किया जा सकता है। And for those whose moon sign is Leo or Aquarius, this eclipse is especially significant. An eclipse is a powerful cosmic energy shift, and if you are spiritually inclined, you can follow a few simple practices during this period. Meditation या quiet reflection, chanting your Isht Devta's mantras, Dan Punya, helping those in need, and avoiding negative thoughts and reactions, especially around the eclipse window. This is a good time for self-reflection and introspection. Mantra Om Suryaya Namaha. This attracts the positive energy of Surya Dev and helps you stay calm and grounded during the eclipse period. Let's talk now about the eclipse's effect on your zodiac sign. अब आप अपनी राशि ध्यान से सुनिए। एरीज, एरीज के लिए this eclipse is connected to career and your public image. वर्क प्लेस पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बट यू विल नीड टू कीप योर ईगो एंड इम्पेशंस इन चेक। हेल्थ में भी थोड़ा ध्यान रखिए, स्पेशली स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज। टॉरस, फॉर टॉरियंस, this time is connected to higher learning, travel और spirituality. अगर आप फॉरेन ट्रिप या हायर स्टडीज प्लान कर रहे हैं, then new options may open up. But when it comes to financial decisions, remember to be extra careful. अभी के लिए big investments avoid करें. Gemini, for Geminis, this eclipse brings transformation and deep emotional shifts. Shared finances, insurance, or even inheritance related matters may come up. Relationships में भी intensity बढ़ सकती है. It's a good time to resolve old issues. Cancer. For Cancerians, this eclipse has a strong effect on relationships and partnerships. Marriages या business partnerships से जुड़ा कोई important decision या development हो सकती है. Focus especially on communication, avoid misunderstandings. Leos. This eclipse is happening in Leo itself. So for Leo, this will be the most personal and intense. The focus is on health, daily routine, and work-life balance. This is a powerful time also to build new habits or let go of old ones. Prioritize self-care. Virgos. For Virgos, this eclipse is connected to creativity, romance, and children. If you're working on a creative project, then a new inspiration may come your way. और love life में भी कुछ significant moments आ सकते हैं, इसीलिए proceed mindfully. Libra. For Librans, this eclipse is connected to home, family, and emotional rules. Property, home renovation और parent related matters may come up. Family relationships में भी कुछ shifts feel हो सकते हैं.
Here, patience and understanding are the keys. Scorpio. For Scorpios, this time is connected to communication, siblings, and short travel. New conversations, contracts, or important messages may surface during this period. Choose your words carefully. Chances of misunderstanding are high. Sagittarius. For you, this eclipse is related to finances and self worth. New sources of income may open up, or you will need to pay attention to your spending habits. Along with material security, it's important to recognize your inner value too. Capricorn. For you, this eclipse is intensely connected to personal identity and self image. Since the eclipse is happening in Leo, which is Capricorn's 8th house, this can be a time of transformation, endings and new beginnings. आपको अपने आप को न्यू वे में प्रेजेंट करने का एक चांस मिल सकता है. Aquarius. For Aquarians, this eclipse is also very significant क्योंकि ये उनके opposite sign में ही हो रहा है. It could be a time of spirituality, subconscious patterns, or finding closure with something. You need to prioritize rest and introspection. Overthinking को avoid करें. Pisces. For you, this time is connected to friendships, social circles, and long-term goals. New connections or group activities may benefit you. This is a good time to clearly define your future goals. So this was the complete breakdown of the solar eclipse on 12th August 2026, the importance and a few simple spiritual practices that you can follow and its effect on your zodiac signs. Remember, an eclipse is a powerful cosmic reminder of what we want to change in our lives. उसे डरने के बदले उसे एक opportunity की तरह देखें, self reflection और growth के लिए use करें. If you found this video helpful, please like it, share it with your friends and family. And if you haven't subscribed to our channel yet, please do so. In the next video, we will talk about the partial lunar eclipse happening on 27th and 28th August 2026. So let's meet in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Thank you.